Hello student, I am Professor Barka Sharma from SIRT College. Today's topic is Karnaugh K Map from Discrete Mathematics. ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है जिसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में जो देखा था Karnaugh K Map क्या है? A easier way to simplify logic expression and it gives the most simplified form of the expression. कार्नोग के मैप जो है उसको हमने पहले देखा था कि टू अगर वेरिएबल्स हैं टू वेरिएबल्स के लिए हम उसका कार्नोग के मैप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। थ्री वेरिएबल्स है तो कार्नोग के मैप में कैसे ग्रुपिंग होगी और कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन होगा एंड फोर वेरिएबल्स में कैसे उसकी ग्रुपिंग होगी एंड कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। नाउ वी रिप्रेजेंट अ डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशन डिजिटल सर्किट। अगर आपके पास में ट्रुथ टेबल की कोई प्रॉब्लम है, लॉजिक की कोई प्रॉब्लम है और उसको अगर अब आप क्या करना चाहते हैं, सर्किट ड्रॉ करना चाहते हैं, डिजिटल सर्किट बनाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए किसकी हेल्प से, कार्नोग के मैप की हेल्प से आप बहुत इजीली उसका डिजिटल सर्किट या लॉजिक सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। Step to design a combination digital circuit from the problem statement derive the truth table। हम लोग स्टेटमेंट का सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे। फ्रॉम द ट्रुथ टेबल derive the unsimplified logic expression। Simplify the logic expression from the simplified expression for the logic circuit। Here डिजाइन ऑफ द कॉम्बिनेशन डिजिटल सर्किट। यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। डिजाइन ऑफ थ्री इनपुट ABC digital circuit that will give and its output as a logic 1 only if the binary number from at the input has more ones than 0। आपके पास में जो प्रॉब्लम है वो थ्री इनपुट के लिए है। थ्री इनपुट इज ABC and the combination is 0 0 0 0 0 1 0 1 0 by the truth table for three variables and the output is 0 0 0 1 0 1 1 1। This is the output. Now we represent in the x is equal to 3. Here the values of 1, 1, 1, 1 is 3, 5, 6 and 7. Now we draw a Karnaugh K map. Karnaugh K map is represented by the simplified form AC plus AB plus BC. And now is the digital circuit for these three inputs. It is represented by a logic gate, AND gate, OR gate and negation is the simplest way for the digital circuit. Now another example, design a 4 input ABCD digital circuit that will give at its output as a logic 1 only. It is the combination of the four inputs ABCD and the output its this we are shown and the x is equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Here the value of 1. Now it is represented in the Karnaugh K map. Karnaugh K map is A bar C plus A bar B plus A B bar C. By this the grade. Now we represent a digital circuit with the help of this Karnaugh K map. It is represented by the AND, OR and negation and it is the simplest form of the logic circuit. And is the example for you, design a 4 input ABCD digital circuit that will give in output logic 1 only if there are more ones than 0 in the binary number form at in the output. This is a very simple question with the help of Karnaugh